Hello friends, today we will discuss about the clavipectoral fascia. So before the clavipectoral fascia, firstly we will discuss about the muscles of the pectoral region and their origin and insertion. तो क्लेविपेक्टोरल फेशिया को समझने से पहले हमें मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन का ओरिजिन और इंसर्शन बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी हमको क्लेविपेक्टोरल फेशिया का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आएगा. ठीक है, तो फॉर द मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन we will draw the diagram of the skeleton of the pectoral region. So this is manubrium of the sternum. This is body of the sternum, and this one is the xiphoid process of the sternum. From the manubrium of sternum, here is the location of clavicle. This is clavicle. So the medial end of the clavicle articulate with the sternum to form the sternoclavicular joint, and the lateral end of the clavicle articulate with the acromion process of the scapula. This is acromion process of the scapula, and this is coracoid process of the scapula. Superior border, glenoid cavity, and this one is acromion process. So now in this diagram, this lateral end of the clavicle articulate with the acromion process of the scapula to form the acromioclavicular joint. Now this is glenoid cavity. The glenoid cavity of scapula articulate with the head of the humerus to form the shoulder joint. From the shoulder end, and this is lateral lip, and this one is medial lip of the bicipital groove of the humerus. Now this is the location of articulation of first rib, and this is the costal cartilage of the first rib. This is second rib. This is costal cartilage of second rib. This is third rib, costal cartilage of the third rib. Fourth rib, costal cartilage of the fourth rib. Fifth rib, costal cartilage of the fifth rib. Sixth rib, costal cartilage of the sixth rib, and this is seventh rib. Okay. Now, so if we talk about the muscles of the pectoral region, there are mainly three muscles located in the pectoral region. First one is from superficial. If we talk about the superficial to deep, so muscles are pectoralis major, pectoralis minor, and the subclavius muscle. So firstly, we will draw the outline of the origin and insertion of the pectoralis major muscle. So origin of the pectoralis major muscle from the medial 1/3 of the anterior surface of the clavicle and lateral half of the sternum up to the sixth costal cartilage, and insert on the lateral lip. The fibers runs laterally and insert on the lateral lip of the bicipital groove of the humerus. So this is the origin and insertion of the pectoralis major muscle. When we cut the pectoralis major muscle from the external hand and the clavicular and reflect it laterally, we can see the deep muscles of the pectoral region, that are the
subclavius muscle and the pectoralis minor muscle. So firstly we will discuss about the origin and insertion of the subclavius muscle. Subclavius muscle arise from the superior surface of the first rib near the costochondral junction and run upward and laterally and insert on the inferior surface of the clavicle on the subclavian groove. So this is the subclavius muscle. Now we will discuss about the origin and insertion of the pectoralis minor muscle. Pectoralis minor muscle arises from the third, fourth and the fifth rib near the costochondral junction, and the fibers runs upward and laterally inserted on the coracoid process. So these are the origin and insertion of the fibers of the pectoralis minor muscle. This is pectoralis minor muscle. So these are the three muscles of the pectoral region: pectoralis major, pectoralis minor and the subclavius muscle. So this is all about the understanding of the pectoralis muscles of the pectoral region. Now we will discuss about the main topic, that is clavipectoral fascia. So हम लोग ये जानते हैं कि जितनी भी मसल्स हैं वो कवर्ड होती हैं, एनक्लोज होती हैं डीप फेशिया के थ्रू. यहाँ पे पेक्टोरल रीजन में जब हम स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया को सुपरफिशियल फेशिया को रिमूव करेंगे तो जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है इसको कवर करे हुए एक फेशिया आएगी जिसको बोलते हैं पेक्टोरल फेशिया. जब हम इसको पेक्टोरलिस मेजर मसल को रिमूव करेंगे तो हमें डीप में मसल्स दिखाई देंगी, पेक्टोरलिस माइनर एंड द सबक्लेवियस मसल which are enclosed in a deep fascia known as the clavipectoral fascia. तो अब हम इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं. For the diagram we will take a sagittal section from the region of medial 1/3 of the clavicle. यहाँ से हम लोग एक sagittal section कट करेंगे ऐसे, ठीक है, और उसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे. Now तो यहाँ पर हम लोग sagittal section का डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो सबसे पहले जब कट करेंगे तो यहाँ पर हमको दिख रहा है दिस इज clavicle. दिस इज clavicle. ये हमने इमेजिन करिए यहाँ से ऐसे कट सेक्शन लिया. ओके, so this is clavicle. Below the clavicle you can see on the inferior surface of the clavicle on the subclavian groove the attachment of the muscle known as the subclavius muscle. So this is subclavius muscle. Now here this is subclavius muscle. Okay, now below the subclavius muscle you can see this is the region of muscle that is pectoralis minor muscle. This is pectoralis minor muscle. This is pectoralis minor muscle. And superficial to pectoralis minor and the subclavius muscle, you can see this is large muscle of the pectoral region known as pectoralis major muscle, which attach from the anterior surface of the clavicle and run downward over the pectoralis minor and the subclavius muscle. So in this diagram, this is the anterior surface of the clavicle. From the anterior surface of the clavicle, this major muscle run downward over the pectoralis minor and subclavius muscle known as the pectoralis major muscle. So in this diagram you can see this is clavicle, this is pectoralis major muscle, this one is subclavius muscle, this is pectoralis minor muscle. Okay, now over the pectoralis major muscle, the pectoralis major muscle covered by a deep fascia known as the
पेक्टोरल फेशिया। तो ये पूरी पेक्टोरलिस मेजर मसल है कवर्ड होगी किसके थ्रू, डीप फेशिया के थ्रू, जिस डीप फेशिया का हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेक्टोरल फेशिया। दिस इज पेक्टोरल फेशिया। This pectoral fascia near the lower border of the pectoralis major muscle. This is the anterior axillary fold. This is anterior axillary fold, which is formed by the pectoralis major muscle. So this deep fascia run over the anterior axillary fold also, and goes deep to goes to the axillary region to form the axillary fascia. This is anterior axillary fold, and this is axillary fascia. So this is a anterior axillary fold, and this one is axillary fascia. Okay, now we will discuss about the clavipectoral fascia. We know that the clavipectoral fascia enclose two muscle, subclavius and the pectoralis minor muscle. अब लोग देखते हैं कि कैसे ये एनक्लोज करती है pectoralis minor and pectoralis subclavius muscle को. So the clavipectoral fascia anteriorly and posteriorly cover and close the pectoralis minor muscle, and near the upper border of the pectoralis minor muscle, the anterior and posterior lamina of the clavipectoral fascia fuse to form single layer of clavipectoral fascia, which run upward near the lower border of the subclavius muscle. And near the lower border of the subclavius muscle, it further split into the anterior lamina and the posterior lamina of the clavipectoral fascia, which attach from the clavicle. Now, on the lower end of the lower border of the clavipectoralis minor muscle, the anterior and posterior lamina of the clavipectoral fascia further fuse to form single layer of clavipectoral fascia, which run downward and attach to the axillary fascia. This part of the clavipectoral fascia is known as the suspensory ligament of axillary fascia. Suspensory ligament of axillary fascia. ये सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है, यहाँ पर ये एक्सिलरी फेशिया से अटैच होता है और उसको पुल करता है, पुल अप करता है, जिसके कारण ये एक्सिलरी फेशिया का शेप कैसा हो जाता है, डोम शेप का हो जाता है. अगर हम अपने आर्म पिट में देखें तो हमारा आर्म पिट का शेप कुछ समवॉट डोम शेप का रहता है. तो यहाँ पर एक्सिलरी फेशिया जो है वो डोम शेप की रहती है ड्यू टू द पुल अप एक्शन ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द एक्सिलरी फेशिया. So this is all about the clavipectoral fascia. So if we talk about the definition or introduction of the clavipectoral fascia, so clavipectoral fascia is a strong sheet of deep fascia which is located deep to the pectoralis major muscle, and it fills the space between the clavicle and the pectoralis minor muscle. So this fascial sheet is known as clavipectoral fascia. This fascial sheet is known as clavipectoral fascia. Now we will discuss about the extension
or extent of the clavipectoral fascia. तो एक्सटेंड की जब हम बात करेंगे, एक्सटेंड की बात करते हैं, एक्सटेंड वर्टिकली एक्सटेंशन देखेंगे, वर्टिकली, देन मीडियली एक्सटेंशन देखेंगे, देन लेटरली एक्सटेंशन. ओके, तो वर्टिकली हम लोग देखेंगे क्लेविपेक्टोरल फेशिया कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, मीडियली देखेंगे कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, एंड दी लेटरली देखेंगे कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है. तो सबसे पहले इस डायग्राम में हम लोग इसको एक्सटेंशन को एक बार देख लेते हैं, फिर इस डायग्राम को कवर कर लेते हैं पूरा. यहां पर हम लोगों ने देखा था ओके. नाउ दिस इज costal cartilage of the first rib. So from the costal cartilage of the first rib up to the lower surface of the medial end of the clavicle, one ligament is extend known as the costoclavicular ligament. So this is costoclavicular ligament. Laterally from the coracoid process up to the clavicle, this ligament is known as the coracoclavicular ligament. This is coracoclavicular ligament and this one is the costoclavicular ligament. Now we will discuss about the extent of the clavipectoral fascia. So if we talk about the vertical extension, so vertically the clavipectoral fascia extend from the clavicle up to the axillary fascia. कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, क्लैविकल से लेकर एक्सिलरी फेशिया तक एक्सटेंड कर रही है. नाउ मीडियल एक्सटेंशन, इफ वी टॉक अबाउट द मीडियली एक्सटेंशन, तो मीडियली द क्लैविपेक्टोरल फेशिया एक्सटेंड अप टू द फर्स्ट रिब, costoclavicular ligament and the external intercostal membrane of the second and third intercostal space. So medial extension is, it is attached from the first rib, costoclavicular ligament and the membrane of the external intercostal space of the second and third intercostal space. Now laterally it extend up to the coracoid process. This is coracoid process and this one is coracoclavicular ligament. So laterally it extends from up to the coracoid process and the coracoclavicular ligament. So this is all about the extent of the clavipectoral fascia. Now we will discuss about the most important thing of the clavipectoral fascia, that are structures piercing the clavipectoral fascia. So for the structures piercing the clavipectoral fascia, we will draw the diagram, another diagram. So I will draw another diagram for the structures piercing the clavipectoral fascia. Okay, so deep to the, this is the clavipectoral fascia. So deep to the clavipectoral fascia, few structures are present that are, this is lateral cord of the brachial plexus, lateral cord of brachial plexus.
and this one is axillary artery, and this is axillary vein. ओके, नाउ कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स करते हैं? तो ये तीन हमने मेन स्ट्रक्चर्स देखे हैं जो डीप टू द क्लेविपेक्टोरल फेशिया में लोकेट होते हैं. तो फ्रॉम द लेटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस एक ब्रांच अराइज करेगी जिसको बोलते हैं लेटरल पेक्टोरल नर्व. दिस लेटरल पेक्टोरल नर्व पियर्स द क्लेविपेक्टोरल फेशिया एंड सप्लाई द pectoralis major muscle. So this is lateral pectoral nerve. फर्स्ट पहला स्ट्रक्चर है जो पियर्स कर रहा है क्लेविपेक्टोरल फेशिया को. नाउ फ्रॉम द एक्सिलरी आर्टरी एक ब्रांच निकलेगी अराइज फ्रॉम द एक्सिलरी आर्टरी. दिस ब्रांच पियर्स द क्लेविपेक्टोरल फेशिया एंड आल्सो पियर्स द pectoralis major muscle and supply the pectoral region. This branch of axillary artery is known as thoracoacromion artery. This is thoracoacromion artery. Now, one vein known as cephalic vein pierces the clavipectoral fascia and drain into the axillary vein known as the cephalic vein. So this cephalic vein drain the blood from the pectoral region into the axillary vein by piercing the clavipectoral fascia. The last structure which pierces the clavipectoral fascia, that is lymphatic. This is lymphatic. These are few lymphatics which drain the lymph from the apical group of axillary lymph node to the pectoral region. ये lymphatics हैं. ये also pierce the clavipectoral fascia. So if we talk about the structures piercing the clavipectoral fascia, those structures are first, second, third and the fourth. These are the four structures which pierce the क्लेविपेक्टोरल फेशिया. इनको याद करने के लिए मैंने दो निमोनिक आप लोगों के लिए बनाए हैं, जो भी आप निमोनिक से याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं. जब हम ग्रेजुएशन पास आउट होते हैं, कॉलेज से पास आउट होकर निकलते हैं, तो हम लोग टीसी वहाँ से लेते हैं, टीसी लेते हैं. तो एक निमोनिक आप याद रखिएगा, टीसी ले लो. ठीक है. तो फर्स्ट टी फॉर thoracoacromion artery, C for cephalic vein, L for lateral pectoral nerve, L for lymphatic. So this mnemonic is for the structure piercing of the clavipectoral fascia. Another mnemonic that is called CALL. कॉल से भी आप याद रख सकते हैं. C for cephalic vein, A for artery, artery कौन सी? thoracoacromion artery, L for lateral pectoral nerve and L for lymphatic. So this is all about the clavipectoral fascia. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो या फिर कोई भी चीज़, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं कमेंट. और अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेरा समझाना पसंद आया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो. थैंक यू.